Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Parliament of Ethiopia in Addis Ababa, describing it as a privilege to speak before the nation's lawmakers. He noted that symbolic connection between India and Ethiopia, referring to the both countries as lands of lions, and drew parallels between India's national song Vande Mataram and Ethiopia's national anthem, which celebrated the motherland. Modi conveyed greetings on behalf of 1.4 billion Indians, stressing friendship, goodwill, and brotherhood. He praised Ethiopia's democratic journey and emphasized that when the will of the people aligns with the will of the state, progress follows, extending his message beyond parliament. He acknowledged farmers, entrepreneurs, women leaders, and youth shaping Ethiopia's future, recalling shared history. Modi highlighted civilizational exchanges across the Indian Ocean nearly 2000 years ago, when merchants traded not only goods but ideas and ways of life. He cited ports like Addis and Dolera as bridges between cultures. He also reminded that Indian soldiers fought alongside Ethiopians during the liberation struggle in 1941. Modi underlined that India and Ethiopia share warmth in climate and spirit, and that their relationship now enters a new era of deeper cooperation and solidarity. Your Excellency, the Prime Minister of Ethiopia, honorable speakers of both houses of parliament, honorable members, excellencies, and my dear sisters and brothers of Ethiopia. It is a moment of a great privilege for me to stand before you today. It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. Honorable members, in this great building, your laws are shaped. Here, the will of the people becomes the will of the state. And when the will of the state is in harmony with the will of the people, the wheel of programs moves forward with hope and purpose. Through you, I am also speaking to your farmers in the fields, to the entrepreneurs building new ideas, to the proud women leading communities and institutions, and to the young people of Ethiopia who are shaping the future. I thank you for the immense privilege. Ethiopia is one of the oldest civilizations in human history. Here, history is alive in the mountains, in the valleys, and in the hearts of the Ethiopian people. Today, Ethiopia stands tall because its roots are deep. To stand in Ethiopia is to stand where the past is honored, the present is full of purpose, and the future is welcomed with open hearts. Your Excellency,
the Prime Minister of Ethiopia, honorable speakers of both houses of parliament, honorable members, excellencies, and my dear sisters and brothers of Ethiopia. It is a moment of a great privilege for me to stand before you today. It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. At the inauguration of the Metro Museum, Delhi Chief Minister Rekha Gupta addressed the pressing issue of pollution in the capital. She explained that transportation is a major contributor with millions of vehicles on the roads, many lacking pollution certificates, releasing smoke and emissions that make it difficult for Delhi to breathe. Gupta highlighted the city's vast spread of nearly 1,500 kilometers and its population of around 3 crores, stressing that the sheer volume of traffic worsens air quality. She emphasized that responsibility lies with citizens to adopt public transportation if Delhi is to remain breathable, framing metro connectivity as a vital solution to reduce vehicular emissions and safeguard the environment. कहते हैं कि पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन है दिल्ली में, कैसे कम होगा? तब मैं ये कहती हूँ कि पॉल्यूशन में एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का है। जब भारत के नक्शे में एक बिंदु बराबर दिखने वाली दिल्ली 1500 किलोमीटर 1483 किलोमीटर में फैली हुई, उसमें 3 करोड़ के लगभग जब लोग रहते हैं, लाखों व्हीकल जब सड़कों पे चलते हैं और उसमें भी लाखों व्हीकल बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के भी घूमते हैं, तब वो जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो रोकता है दिल्ली की सांसें। आज यदि मेट्रो जैसा ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास है तो वो एक बहुत बड़ी क्रांति है पर्यावरण को बचाने के लिए, दिल्ली को बेहतर और हरा भरा रखने के लिए। आज बिना मेट्रो, माइनस मेट्रो अगर हम सोचें तो हम दिल्ली को इमेजिन नहीं कर सकते, और ये हम सबका दायित्व है। यदि हम चाहते हैं कि दिल्ली ब्रीदेबल रहे तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करना ही होगा। हम अपनी सुविधाओं के लिए इस पूरे शहर को दिक्कत में डालते हैं और फिर खुद ही परेशान करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम होगा। जब हम सब लोग ये तय करेंगे कि मैं अपने अकेले के लिए गाड़ी निकाल करके नहीं चलूंगा, मैं यहां पे कारपूल में चलूंगा, मैं मेट्रो से जाऊंगा, मैं बस से जाऊंगा। और मैं बधाई देना चाहती हूं अपने मंत्री जी को भी, जो लगातार हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे इतना काम कर रहे हैं कि आज दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन जो हमारी बसेस हैं उसको हमने तय किया कि पूरी तरीके से ईवी पे लेके जाएंगे। तो आज लगभग 3,500 बसेस हमारी जो दिल्ली सरकार की हैं वो ईवी पे हम कन्वर्ट कर चुके हैं, पेट्रोल और सीएनजी से। और 2026 के अंत तक हमारा टारगेट है कि 100% अपनी बसेस को हम ईवी पे लेके जाएं, और बहुत जल्द हम अपनी ईवी पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिस पे मंत्रालय और मंत्री जी काम कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप में दिल्ली वालों के लिए ईवी लेने के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा, और भाई सीएनजी और पेट्रोल वालों के लिए थोड़ा सा सख्ती बरती जाएगी। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरीके से विदेशों में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर यूज करते हैं।
Addressing a press conference, Delhi Minister Kapil Mishra announced that all private offices within the National Capital Territory will be restricted to operating with no more than 50% staff physically present at the workplace. He clarified that the remaining employees must mandatorily work from home to comply with the directive. Mishra emphasized that the measure was aimed at ensuring safety and reducing risk while maintaining essential business continuity. The announcement underscores the government's focus on balancing workplace operations with public health priorities, requiring organizations to adapt to hybrid functioning models under the new guidelines. द्वारा किया गया है, श्रम विभाग के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो हमारा कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का दिल्ली के अंदर, उसने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और बाद में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण विभाग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हों या प्राइवेट हों, बिजनेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी को मैक्सिमम केवल 50% आपकी फिजिकल अटेंडेंस ये आप रखें और बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम ये कल से तुरंत लागू करें। इसके लिए हम लोग आज श्रम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है और डायरेक्शंस जारी की जा रही हैं। इसमें हम लोग कुछ सेक्टर को एक्सेप्शन कर रहे हैं, कुछ सेक्टर को छूट दे रहे हैं, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के जो सेक्टर है, हॉस्पिटल के ऊपर ये लागू नहीं होगा, फायर सर्विसेज के ऊपर ये लागू नहीं होगा, प्रिजन्स जो जेल प्रशासन है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये लागू नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और सैनिटेशन इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, इससे रिलेटेड म्युनिसिपल सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो भी ऐसे विभाग हैं जो कि एयर पॉल्यूशन से टैकल करने का काम कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। बाकी सभी के ऊपर, दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों के ऊपर, सरकारी और गैर सरकारी सबके ऊपर ये लागू किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम 50% फिजिकल अटेंडेंस अपने ऑफिसों में देनी है, अपने कार्यालयों में देनी है और बाकी 50% लोगों को आपको वर्क फ्रॉम होम देना है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये ऑल प्राइवेट ऑफिसेस फंक्शनिंग विद इन एनसीटी दिल्ली shall operate not more than 50% staff capacity attending the workplace. Congress MP Manikim Thakur strongly welcomed the Delhi court's refusal to take cognizance of the Enforcement Directorate's complaint in the National Herald case. He asserted that the verdict was a clear response to the misuse of the ED, declaring the truth has won. Thakur accused the BJP of falsely advertising the National Herald issue for the past decade, claiming the ruling had delivered a befitting reply to such political tactics. His remarks underscored Congress' position that the case lacked merit and was driven by vendetta, while portraying the judgment as vindication against prolonged attempts to malign the party and its leadership through institutional misuse. वेंडेटा और ईडी का किस तरह से सरकार कंटिन्यूअसली मिसयूज़ कर रही थी, उसका कल दिल्ली कोर्ट ने करारा जवाब दिया है और ईडी का मिसयूज़ का खिलाफ और हमारा जीत हुआ है, ट्रूथ का जीत हुआ है, सच्चाई का जीत हुआ है। 10 साल से नेशनल हेराल्ड का झूठे मूठे प्रचार करते हुए बीजेपी वाले घूम रहे थे। प्रधानमंत्री से लेके सारे लोग, बीजेपी का आम कार्यकर्ता से लेकर सारे लोगों का झूठों का पूरा प्रचार चल रही थी। उस झूठों प्रचार का कल दिल्ली कोर्ट ने बहुत करार जवाब दिया है। इस ईडी का मिसयूज़ करने का तरीका बंद करना चाहिए। बीजेपी आरएसएस ईडी का एक अपना विंग बना चुकी है। ईडी का ऑफिसर्स उनका प्रचारक जैसे काम कर रहे हैं और इस केस में भी ईडी का ऑफिसर्स ने किस रवैया यूज़ किया है, इसका खिलाफ और इसका हमारा सत्य में जयते हुआ है। आज ईडी का वेंडेटा और ईडी का किस तरह से सरकार कंटिन्यूअसली मिसयूज़ कर रही थी, उसका
कल दिल्ली कोर्ट ने करारा जवाब दिया है और ईडी का मिसयूज का खिलाफ और In Belgavi, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah and Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar staged a protest alongside the party workers in front of Mahatma Gandhi statue. The demonstration was marked by their presence at the symbolic site, underscoring the leaders' intent to highlight political grievances and rally support. The protest reflected the Congress leadership's strategy of invoking Gandhi's legacy as a moral anchor while pressing their demands. The gathering drew attention to ongoing tensions in the state's political landscape, with the leaders emphasizing their opposition stance through the public mobilization. The event showcased both solidarity within the party ranks and the use of symbolic spaces to amplify political messages. महात्मा गांधी जी की नेशनल हेराल्ड की यंग इंडिया की ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ದಿನ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರಗಳೇ, ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ದಿನ. 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಿ In Ethiopia, during a briefing on Prime Minister Narendra Modi's visit, a media spokesperson Radhir Jaiswal said that Ethiopia holds significant importance for India as a partner in the global south. He noted that much of the visit had been centered on exploring ways to further strengthen this partnership and deepen cooperation between the two countries. We welcome all of you to this special press briefing by Secretary ER Sri Sudhakar Talela on the ongoing bilateral visit of Prime Minister Sri Narendra Modi to Ethiopia. As you all know, for us, Ethiopia is a very important partner in the global south, and a lot on this visit has been focused as to how we can strengthen this partnership further, not just for ourselves, but also for the larger community in the global south as well. We are also joined by our ambassador to Ethiopia, Sri Anil Rai, and Joint Secretary ISA in the Ministry of External Affairs, Sri Janesh Kain. With that, I invite Secretary ER for his initial remarks, after which we can take some questions from the floor. Sir, the mic is yours. I warmly welcome all of you to this special press briefing by Secretary ER Sri Sudhakar Talela on the ongoing bilateral visit of Prime Minister Sri Narendra Modi to Ethiopia. As you all know, for us, Ethiopia is a very important partner in the global south, and a lot on this visit has been focused as to how we can strengthen this partnership further, not just for ourselves, but also for the larger community in the global south as well. We are also Delhi Lok Sabha Speaker Om Birla expressed his condolences on the death of former MP Ram Vilas Vedanti. He said Vedanti had made notable contributions during his public life and deserved deep respect. Birla also instructed the House to observe the moment of silence as a mark of honor for the late leader. मुझे सदन को हमारे पूर्व सहयोगी के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर राम विलास वेदांती उत्तर प्रदेश के मछली शहर
संसदीय क्षेत्र से 11वीं लोकसभा और प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे रेल संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। एक सक्रिय समाजवादी समाजसेवी के रूप में उन्होंने गंगा नदी के प्रदूषण के विरुद्ध अभियान एवं कई आध्यात्मिक अभियानों का नेतृत्व किया। डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन 15 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के रीवा में 67 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा डॉक्टर रामविलास वेदांती के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। In Lucknow, Uttar Pradesh, DGP Rajiv Gupta said during the PAC Foundation Day program that the force had completed 70 years of the service as an essential wing of the Uttar Pradesh police. He noted that the PAC played a crucial role in maintaining law and order, managing VIP duties, handling disaster relief, supporting elections and countering Naxalism and terrorism. He mentioned that the Chief Minister had attended the event, motivating personnel and discussing training and professional development initiatives. Gupta also pointed out that the PAC functioned as a feeder cadre for the STF and the ATS commandos. He congratulated the force for its professionalism, strong performance and continued excellence. स्थापना दिवस था। पीएसी न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अभिन्न अंग है, लेकिन बल्कि जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में जो वीआईपी प्रबंधन है, उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से आपदा राहत का कार्य है और चुनावों का समग्र प्रबंधन है। इसमें पीएसी की हमेशा से बहुत ही अग्रणी भूमिका रही है। नक्सलवाद के उन्मूलन में, आतंकवाद के उन्मूलन में और आज भी एसटीएफ और एटीएस में कमांडोज का जो फीडर काडर है हमारा, वो पीएसी ही है। तो पीएसी का जो आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज पीएसी का जो ये आज 78वां स्थापना दिवस था, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए, उन्होंने पूरा समय दिया। वो हमेशा से पुलिस के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें न केवल आते हैं बल्कि उत्साहवर्धन करते हैं और आगे भी पीएसी की व्यावसायिक दक्षता, इनका कौशल, इनका प्रोफेशनलिज्म और आगे बढ़ेगा, इसके लिए भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श और ट्रेनिंग के बारे में और आगे चर्चा होगी। मैं पीएसी के आगे के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, दक्षता के लिए उनको बधाई देता हूं। आज पीएसी का 78वां स्थापना दिवस था। पीएसी न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अभिन्न अंग है। At the CII Global Higher Education Summit in Delhi, Chief Economic Advisor Dr. V. Ananta Nageshwaran remarked that speaking after three eminent educationists carried its own challenges, noting humorously through a Mark Twain reference that many of his thoughts had already been expressed by the earlier speakers. He said that although the points made on stage had been articulated clearly, some ideas deserved repetition and emphasis. He added that the would therefore share his own reflections even if they sounded familiar, and described it as a personal privilege to address the 15th CII Higher Education Summit at a time he considered significant for India's education system. Hazard or risk in speaking after three eminent educationists, as Mark Twain once said, all my good thoughts have been stolen by my ancestors. So I can say that all my good thoughts and points have been already enunciated very well and very clearly by all the three speakers on stage. But certain things bear repetition and reinforcement. So I will take solace in that and share some of my thoughts which may appear to be things familiar to you because you just heard them from the three distinguished speakers on the dais.
So, for me, it's personally a privilege to address the 15th CII Higher Education Summit at a moment of genuine consequence for the Indian education system. Let me just make sure that I don't overshoot my time. We are meeting not merely to discuss incremental improvements, as Naushad and Professor Sakarabuddhe pointed out, but to reflect on how India prepares itself through education for a rapidly changing world. Let me begin by acknowledging the leadership of the Ministry of Human Resource Development and the Honorable Minister, who is not present here, for sustained and thoughtful attention that higher education has received in recent years. The vision articulated through the National Education Policy 2020, with its emphasis on multidisciplinary universities, academic flexibility, research orientation, and institutional autonomy, has provided with a long-awaited strategic compass. Equally important has been the Ministry's openness to dialogue with state governments, universities, industry, and global partners. In a system as large and as diverse as India's, that willingness to consult, listen, and co-create is itself a reform. It signals confidence, maturity, and trust in the ecosystem. The spirit of reform has also translated into concrete policy action. A particularly notable milestone was reached in 2023 when norms were liberalized to allow reputed foreign universities to establish campuses in India. There is a certain hazard or risk in speaking after three eminent educationists. As Mark Twain once said, all my good thoughts have been stolen by my ancestors. So I can say that all my good thoughts and points have been already enunciated very well and very clearly by all the three speakers on stage. But certain things bear repetition and reinforcement. So I will take solace in that and share some of my thoughts, which may appear to be things familiar to you because in Bhopal, Madhya Pradesh, BJP MLA Rameshwar Sharma commented on the renaming of MGNREGA to Viksit Bharat Ji Ram Ji. He stated that the Congress party had frequently used Mahatma Gandhi's name but had not fulfilled promises such as providing housing for the poor. Sharma said the BJP followed Gandhi's ideals through concrete actions. He added that in his view, Prime Minister Narendra Modi had worked to bring Gandhi's vision of Ram Rajya closer to reality. Sharma referred to the initiatives such as the construction of the Ram Temple, the provision of permanent homes for economically weak families, the issuance of medical insurance cards worth 5 lakh, and efforts to recognize blind farmers. नाम का इस्तेमाल किया। हम महात्मा गांधी जी के विचार का और महात्मा गांधी जी के काम का अनुसरण कर रहे हैं। कांग्रेस ने गांधी जी के नाम लेकर अनेक बार सत्ता में आई पर गरीब का घर नहीं बनाया। आज जगत में, दुनिया में ये दुनिया जानती है कि अगर महात्मा गांधी जी के राम राज की सही कल्पना को जमीन पर उतारने का किसी ने काम किया है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, इसलिए गरीब के पक्के मकान बनाने का काम किया, इसलिए हमने गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, इसलिए अन्नदाता किसान का हमने सम्मान किया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे सबका सम्मान हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, और यही काम नरेंद्र मोदी जी सरकार कर रही है। कांग्रेस को राम The wrap-up of the Inside News. Keep watching CVR English News.